में गर्मी, जोश, जज्बा और जुनून के साथ खिलाड़ियों की वर्दी देखने को मिलेगी। डे नंबर 6 और मैच नंबर 69 में काजीरंगा राइनोस वर्सेस मुकाबला देखने को मिलेगा अरावली एरोज के बीच में। पॉइंट्स टेबल की भी अगर बात करें तो काजीरंगा राइनोस जो कि पहले के राउंड में बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी और इस राउंड में अगर बात करें तो बॉटम प्लेस पर अभी विद्यमान है। वहीं अगर अरावली एरोज की बात करें तो 4th पोजीशन पर है। 5 में से 3 मैच इन्होंने जीते हैं। अगर आज जीती तो 3rd पोजीशन प्राप्त कर लेगी। और जी हाँ दोस्तों, शंखभेरी का वक्त हो चुका है, रणभेरी का वक्त है, शंखनाद का वक्त है और बुलाते हैं हमारी पहली और आज की इस इंपॉर्टेंट मैच में सबसे ज्यादा अपना किरदार दिखाने वाली टीम के बारे में। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले डे नंबर 6 के बूस्टर राउंड के मैच फिक्चर्स के बारे में बात करेंगे। मुथल मैग्नेट्स ने अपना पहला मुकाबला 45 पॉइंट्स के साथ जीता। वहीं दूसरा मुकाबला पेरियार पैंथर्स ने 2 पॉइंट्स के साथ जीता। ये कड़ा मुकाबला था। और वहीं टेडोबा टाइगर्स ने 23 पॉइंट्स के साथ अपनी जीत बढ़त बनाई। जी हां, अब मुकाबला होने जा रहा है काजीरंगा राइनोस वर्सेस अरावली एरोज को। तो बुलाते हैं हमारी स्पेशल टीम को। प्लीज वेलकम काजीरंगा राइनोस। And now we would like to invite our special team, our extraordinary players, Aravalli Arrows. Good evening everybody here on Fan Code, and Yuva Kabaddi series has been such a revelation because of this team in the survival round. Though I should underline that Kaziranga Rhinos coming in as the table toppers in the survival round, where Mohit Narwal, and there is a change in the right corner where Hitesh is coming in, Hitesh Karyan, and then there is Partik Daya, the biggest Rhino with 202 rate points, and with the covers it's Rohit and Mohit to make sure, Mohit Kuldeep and Rohit Kumar to make sure the covers are secured. And also there is a different rating partner for Partik Daya as Manu makes his way in, a very changed looking side. But as I mentioned, the survival round was such a fabulous run for their money in the top of the table. Here they are being tried to push to the wall by all the other teams because they're lagging behind in the bottom place of the booster round. And Kaziranga Rhinos really will look at this match to make a big comeback. And to stop them from making a comeback is Aravalli Arrows, where they are coming in with a big win against Panchala Pride, 62-28, high on confidence as Lokesh Gosalia and Mahendra Chaudhary look out the corners. Jai Bhagwan, the beam of the Raiders, with 119 rate points, and also to support him in the rating is Gangaram. But there is a big revelation that's happening where the Gurjar combination, the Bhaichara between them, is also helping in raiding as well, as Govind Gurjar has gone in and put up a couple of super 10 performances, and captain Kapil Gurjar is there with 50 tackle points. And to introduce the men to watch out for, I will call in Navneet, my fellow commentator alongside me. Navneet, good evening. गुड इवनिंग नवीन, कैसे हैं आप? वाह, बहुत बढ़िया। या मेन टू वॉच आउट फॉर, देयर यू गो नवनीत। बिल्कुल, यहाँ पर प्रतीक दाहिया जो कि 266 रेट में 202 पॉइंट्स ला चुके हैं। मात्र ऐसे 2 खिलाड़ी हैं और सुपर 10 10 है उनके, और रेट स्ट्राइक रेट 75%। ये गजब का स्ट्राइक रेट है। 4 बार जाते हैं तो 3 बार निश्चित रूप से रेट करके आते हैं और पॉइंट्स लेकर के आते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ जय भगवान, और निश्चित रूप से इनके भरोसे रही है अरावलीज की टीम। 147 रेट्स में 119 पॉइंट्स लाया है। 7 सुपर रेट्स उनके भी है। और कमाल की बात देखिए, 80%, 80.95, यानी हर 5 बार में से 4 बार जो वो रेट करते हैं वो सक्सेसफुल रेट होता है। You and your mathematics skills
You sound like that Anand Kumar of Super 30 movie, which Hrithik Roshan played so well. As the toss is being updated by the Aravalli Arrows, where they have won the toss and they have selected the court. And to talk about the team's performances, I will be somewhere not very happy talking about the Kaziranga Rhinos, because they haven't won a single match here, and all that 6 losses has come in the booster round. But the biggest Rhino is here in the house, Pratik Dhaya, with a double century in the raiding department, and he will be going up against the Aravalli Arrows, who are high in confidence with 5 wins under their belt, and in fact 8 wins under their belt from 14 matches, and just 5 losses, most of them in the survival run. And Dean Jai Bhagwan is there. Now it's all time to see and if Kaziranga Rhinos can make a comeback. But before that, it's the all-important countdown. Match number 69. Okay, so that's a favorite number for a lot of people, because what happens there is, it is that phase of the time where you really want to go out and express yourself, and the biggest Rhino in the house is coming in to express himself from the right to left of our screens. Navneet, he is making a comeback. Of course, he's done it well, and then he starts off with a beautiful, easiest of the points can that he ever be getting. बिल्कुल, प्रतीक दाहिया अपने टीम का खाता खोल चुके हैं, और एक तरफ है अरावलीज के एरोज, यानी कि राजस्थान से एक टीम आ रही है जो कि पश्चिमी भारत की टीम है, और वहीं पे पूर्वोत्तर भारत से काजीरंगा राइनोज की टीम। और ये बेहद दर्शनीय बात है कि हमारे देश में इतनी विविधता है, जहां एक तरफ असम है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की भूमि, और यहां पर काजीरंगा राइनोज ने शिकार कर लिया है, और यहां पर 2 पॉइंट हो गए हैं नवीन। And that strong block coming in from the right cover. It was so nice to see as Mohit Kuldeep put in that block, and also did not allow the Raider to turn on the tumble, and covered the inward movement also, and nullifying the turn. Very well done, and beautifully explained by you there, Navneet, because you know that the Indian subcontinent is so vast and so different, because at every 30 kilometers the landscape changes, the culture changes, language changes, language slang changes. So this is a marvelous nation, and that is why the song has been so very popularly written, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी बिल्कुल, वो इकबाल, मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये लाइनें लिखी गई थी, और जब राकेश शर्मा चांद पर गए थे तो वहां से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था कि भारत कैसा दिख रहा है, तो यही लाइन जो आप कह रहे थे, यही लाइन राकेश शर्मा ने चांद से कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। The first man to go into outer space from India, and the first point here for the Aravalli Arrows in the defense, and the first man to get that is Kapil Gurjar, the captain, on Pratik Dhaya. What was really evident in that is the push came along, and then the turn also was nullified in a proper fashion, as the equalizer has been scored. Cannot forget legends or people like Rakesh Sharma, who's put up India in that space where India was never on. And all credits once again to most of the scientists, most of the credits going to them as well, because how can we forget the great Abdul Kalam, who was there working with that. And I'm sure, Navneet, you'll be talking a lot of rocketry science. Of course, Nambi Narayanan, the man, he's been very, very evident in putting up India's name initially into that spacey world, as once again Manu has gone in with that speedy rate, I should say, with a 8 point. जी हाँ, और जब चांद की बात हो रही थी तो मैं बताना चाहता हूँ कि कल पूर्णिमा है, और मैं आज जब रास्ते पर जा रहा था नवीन, तो चांद क्या शानदार चमक रहा था, और बेहद खूबसूरत लग रहा था अपने धरती से देखने को चांद।
और उसी खूबसूरती के साथ अभी अरावली एरोज ने भी बता दिया कि हम पीछे नहीं रहने वाले हैं और फिर से एक टच पॉइंट मिल गया यहाँ पे राम कुंवर को। दिन ब दिन ये बहुत बढ़िया रेडर के ओर पे उभर के आ रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल, और वो जिस तरीके से मारे हैं लग रहा है कि बिल्कुल वो अरावली की वो तीर मारी है उन्होंने, एरो मारा है और राइनो को वो मार करके एक पॉइंट वहां पर लिया। And the jump was very nice. And where was this lad? Manu. Oh, there you go. 2 points for him. And left corner, Mohit Narwal made to look as if there was not even an attempt that was put in. In fact, Lokesh Gosalia, correction, has to go back on the bench from Aravalli Arrows. Manu, what a nice name and what a nice raider for a pleasant surprise from the Kaziranga Rhinos think tank to put him inside. And he's got in between the points as Pratik Dhaya was taken off from the mat and then he's revived him very nicely. आपने मतलब चांद की बात तो की और आपको इतना भी मतलब समय और उसको तराशने का और उसको देख के उसको एंजॉय करने का जो मनोभाव है, I really like that, Navneet. You saw the moon and you enjoyed and expressed it in a nice way. क्योंकि आज तो लोग बहुत कम ही देखते हैं आसमान की ओर, सब लोग घुसे रहते हैं मतलब जमीन की ओर और मोबाइल को देखते हुए। एंड व्हाट यू हैव डन इज नाइस। जी हाँ, ऊपर देख रहा था, चांद दिख गया। इसी बीच राम कुंवर आखिरी रेड में बिल्कुल देखिए राम कुंवर एक बार फिर से जा रहे हैं और वो जो एक पॉइंट लाया था पिछली बार उन्होंने, अब देखिए अपना वक्त लेते हैं और ये कमाल का दृश्य है, किस तरीके से वो धक्का मार करके मिड पॉइंट पर चले गए और वो फोर्स, वो मोमेंटम वो देखने को मिला। और ये कबड्डी की जो बेसिक्स है यहाँ पर बहुत ही शानदार रूप से दिखाई उन्होंने। They are missing their proper right corner defender is Kaziranga Rhinos because it is so important. And Pratik Dhaya once again comes up with a blinder of a raid as he's brought in 4 points. This time Ram Kuwar has to go back. What was the necessity in going and committing a suicide when going into raid you were doing so well and then going in against Pratik Dhaya was not required. Kapil Gujjar started the error and then the gap was not covered at all. How can a cover defender be in so very front and then the corner defender just go right behind him? Mahendra Chaudhary was just right behind his captain instead of blocking the way out. And also Ram Kuwar in that moment had to go back. And Kaziranga Rhinos is missing Hardeep. Very big time here, I should say. Hardeep Ranbir with 37 tackle points is not around. And Hitesh is not doing very well. Super tackle situation. I guess Navneet लेके जाएंगे पॉइंट। जी हाँ, आसानी से प्रतीक, और कमाल की बात है ना, आज वो शानदार खेल दिखा रहे हैं। और जो बात आप अक्सर कहते हैं, सबसे बड़े राइनो है, वो बिगेस्ट राइनो ऑफ द गेम है। और हालांकि उनसे आगे नरवाल साहब निकल गए हैं लिस्ट में और वो चाहेंगे कि वो फिर से वो नंबर 1 की जो गद्दी उनकी थी काफी दिनों तक, वो वापस आए। देखिए पीछे कैसे आराम कर रहे हैं, अपने वक्त ले रहे हैं और ये रेस्ट करना भी जरूरी है। यहाँ पर देखिए 7 के 7 खिलाड़ी काजीरंगा राइनोस के, वहीं अरावली एरोस के आखिरी तरकश में जो उनकी तीर है वो चलाने के लिए भेज दिए हैं, लेकिन वो तरकश की तीर नाकाम हो गई है और यहाँ पर ऑल आउट हो गई है टीम। Cannot expect much from a defender, isn't it? और वो तरकश की तीर तो मतलब निकली ही नहीं अंदर से, हाँ, और वो मतलब फिर से चालू होगी एक ऑल आउट के बाद, ऑल इन आएंगे तब। लोकेश गोसलिया was a man who went in with that raid but could not even take out a bonus. Once again Kapil Gujjar is somewhere not getting it right today. Trying to go in to surprise a left raider. It should not be the right cover going in for that. It should be the left cover going against the left raider. So somewhere Kapil Gujjar trying to surprise. Manu was surprised by himself. But this is nice to see. Aravalli Arrows, Gangaram moving very swiftly, moving really nice. And Jai Bhagwan is been there. And also Ram Kuwar
and what a run of the money that he's been into. That is nice to see. So somewhere Aravalli Arrows also looking strong, but not against the raiding trio of Kaziranga Rhinos. Partik Daya doing well, Manu doing well, and also Sagar Ramesh somewhere here and there he does it well. Manu was asking for that sweeping toe touch. I do not think that he got some touch on that on the right corner. Yeah, the referees agrees with that. No touch whatsoever. इस गेम में जिस तरीके से काजीरंगा राइनोस पॉजिटिविटी के साथ आई है और यही पॉजिटिविटी उन्हें पूरे टूर्नामेंट में रखना होगा और उन्हें एक बात याद रखना होगा कि उन्हें इस राउंड में टॉप नहीं करना है. वो अगर अंडर 6 आते हैं तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और ये चीज अगर वो सोचते हैं, अपने टारगेट्स को थोड़ा सा छोटा करते हैं, स्मॉल टारगेट्स को लेकर के चलते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस उस टीम में वापस आएगी और क्या पता जिनको आप बिगेस्ट राइनो कहते हैं वो बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए और गेम कब पलट जाएगा हमें पता नहीं. डेफिनेटली पलटा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस टाई होल्ड के बारे में वो कितना कहा जाए उतना ही कम है. Look at that from that left corner. It was really well executed by Mohit Narwal and did not allow the Raider to have a sniff of the midline. Just so much front in of the back line, and then he did not have trouble in stopping the Raider. You mentioned a very good point, and now Partik Daya has been pinned down for the first time in this match. Mahendra Chaudhary going in with that double ankle hold with a diving one, and then even the jump could not stop the biggest Rhino from going towards the midline. Support also was coming in at the right time. Ram Kuwar comes in. I will really go back to that point, Navneet, which you made. Maratha Marvels have given a very good chance for Kaziranga Rhinos, I should say here, because the way they lost towards the end of that match, or rather the whole match, was so dominantly won by Tadoba Tigers in the last match at 6 p.m. that we had. What has happened is, now Kaziranga Rhinos have all the chance to topple them and go ahead of them, because they are at number 7 is Maratha Marvels, and now if Kaziranga Rhinos win this match, they will go up into that number 7 position and going forward where the double round robins round starts. It will be very nice to see this team coming back as 2 points for Sagar Ramesh, very easily coming in. जी हाँ, बेहद आसानी से वहां पॉइंट लिया है और सागर रमेश जिनकी जर्सी का नंबर भी 2 है और वो 2 पॉइंट लेकर के आए, कमाल की बात है. और देखिए कि क्या कर रहे हैं, ये रुक जा रहे हैं और ये सब दृश्य अच्छा लगता है आप देख करके. क्या वो 1 पॉइंट लेकर आए निश्चित रूप से. यहाँ पे देखिए इशारा उंगली से करते हुए कि 1 पॉइंट आपको मिला है जनाब. Aravalli Arrows somewhere just missing out another raider is what I feel, because Jai Bhagwan has to go in and raid very, very soon and very swiftly. He's not doing that. The diving ankle hold comes in from the right corner of the Aravalli Arrows, and that's once again Mahendra Chaudhary getting in that point and nabbing down another raider this time. जी हाँ, राइनोस के अनदर रेडर को पकड़ लिया. एंकल होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड था और निकल नहीं पाई उनके पकड़ से वो, उनके पंजे से वो. और देखिए यहां पर देखिए किस तरीके से पकड़ लिया गया, लेकिन मिडलाइन को उन्होंने टच कर लिया है. क्या कमाल की फुर्ती थी वहां पर गंगाराम की. गंगाराम 2 पॉइंट लेकर के आए हैं और देखिए उनके एंकल होल्ड करना चाहे, आखिरी में उन्हें फिर से पकड़ने की कोशिश की गई. फिर से एक बार आपके फेवरेट खिलाड़ी, मुझे मालूम पड़ता है कि ये आपके फेवरेट खिलाड़ी है. No, whoever plays well is my favorite that day. That's all. Whoever fights it out on the kabaddi mat is my favorite, because I like kabaddi to be very closely fought, and I like that excitement that it brings in when there is not a one-sided game. And today Kapil Gurjar is definitely not doing good to his team as a captain. He needs to just stay on and make sure he does not go for that hasty tackles, especially against Partik Daya. He's done it for 3 occasions now continuously, and that's the reason this 8-point lead is with Kaziranga Rhinos. And just talking about Gangaram's raid on that previous occasion when he got those 2 points, it was
the swiftness, it was the brilliance in the speed that he showed, where even the cover defender, he was so close towards his knees and ankles, he could not get it across. जी हाँ, यहाँ पर देखिए 6 खिलाड़ी और 3 चेन बना लिया है। प्रतीक अपने वक्त का इंतजार करते हुए, अपने मौके का इंतजार करते हुए, और वो कभी भी अपने हॉर्न से किसी भी खिलाड़ी को गेम पलट सकते हैं, और वो एम्प्टी रेड करके जा रहे हैं। ये भी कमाल का दृश्य। उन्हें मौका नहीं मिला तो जबरदस्ती उन्होंने मौका नहीं बनाया। और देखिए यहाँ पर 4 खिलाड़ी, 2 चेन है, यहाँ पर 1 रेडर है, और क्या चेन में फंसा पाएंगे, क्या चेन में फंसा पाएंगे वो गंगाराम को। और देखिए क्या लंबी टांगे हैं प्रतीक दाहिया के, और यहाँ पर चेन तोड़ करके उन्होंने डिफेंस करना चाहा, छका करके गंगाराम ने वो एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट ले लिया। देखिए किस तरीके से चेन टूटी, दुर्घटना घटी। Yeah, I should say wrong strategy by Mohit Narwal, because when you are in the chain with Pratik Daya, I'm sure Pratik Daya will not go for the defense, but what a tackle! Oh, Lokesh Gosalia is known to make all such wonderful tackles, and look at that, even after getting the bonus, and Pratik Daya was his way towards the midline, Lokesh Gosalia goes in from that left corner position and held the Pratik Daya's waist in such a strong fashion, and that's reducing men on the Kaziranga Rhinos. It's a super tackle situation. Now it is very important for Ramkuo to at least clean this up, or at least get 1 point. Can he go in? He's cornered the defenders at one side. Here there is a big opportunity, and he goes in swiftly and cleans him up completely, and he is livid. He is livid. The other defender on. There we go. That is not what Sagar Ramesh should have wanted, is what is being told there. Pratik Hooda. Oh, he showed the anger, rightly so, because when Pratik Hooda went into that diving ankle hold, somewhere Sagar Ramesh should have gone in a little more quicker than expected, but he did not come in. Oh, check this out. That's 4th time Kapil Gurjar is made to look like a small defender than a big captain. Look at that. हटो मेरे रास्ते से, बिल्कुल हटो मेरे रास्ते से वहां पर कर दिया प्रतीक दाहिया ने। और पिछले चंद मिनटों में जिस तरीके से खेल बदला है, अरावली एरोज इससे कॉन्फिडेंस लेगी और वो बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है। तो 16 मिनट का खेल हो चुका है, और इस 16 मिनट के खेल में जो दोनों टीमों को सेपरेट कर रही है वो मात्र 4 पॉइंट है, मात्र 4 पॉइंट। और मेरे ख्याल से दोनों टीम एक बार ऑल आउट हुई है, तो गेम काफी टक्कर का रहा है नवीन। और यहाँ पर फिर से एक बार पकड़े गए हैं सागर रमेश। This is the tackle of the highest quality for me, really, from the cover defense. This is nice to see. Govind Gurjar is doing it well from the left cover, but the issue is on the right cover. Today, Kapil Gurjar has looked that he's not even got ready for this match. Even this is the 4th match of the day. He's just thinking the day has begun. No, Kapil bhai, this is the game. This is the last game of the day, and this is not how you really need to go in for that hasty tackles against Pratik Daya. And he was, and I really want to see if somewhere the coach of Aravalli Rhinos needs to speak to him as he's sitting on the bench. He cannot talk, of course, that's the rule, but he has to come in, take that timeout. Very importantly, once again, see, he is there on the mat, number 1 on that right cover, but Pratik Daya goes in very swiftly and he gets the bonus. That's okay if you give him the bonus, it's fine, it's just 1 point. And what that also does is, it's the do or die raid now for the Aravalli Rhinos, and Gangaram has that bonus option open for him. So when Pratik Daya gets you the bonus, the do or die raid goes away from the team. There we go. He's got that, and he's very safe. But on a do or die raid, I would not vouch for a raider to be so strongly believing in the bonus, Navneet. बिल्कुल, और डू और डाई रेड में वो बोनस लेकर के आए, काबिले तारीफ। यहाँ पर 3 पॉइंट के डिफरेंस है, और यहाँ पर रोक लिया है। यहाँ पर फिर से राइनोस का शिकार हुआ है, और लगातार अपने तरकश से तीर निकाल करके एक करके जख्मी कर रहे हैं राइनोस को। It was that advanced tackle going in from Mahendra Chaudhary, but the point will go to him, but I will give all the marks to Lokesh Gosalia. The advanced tackle was there from the back line,
but then the Raider somewhere was having the opportunity to go towards the midline by jumping and making sure his ankles were not in the clap. But Lokesh Gosalia came in and stopped the Raider. That was such a nice combination. जी हाँ, वो शानदार परसूट आया है। क्या वहां पर टच किया था प्रतीक दाहिया ने, और देखिए इंतजार कर रहे हैं अपने मौके का। आखिरी कुछ चंद सेकंड बचे, 90 सेकंड का खेल बाकी है, और इस हाफ में मात्र 2 पॉइंट से वो काजीरंगा राइनोज लीड कर रही है। और यहां पर देखिए लगातार 3 चेन बना लिया है, और देखना है कि मिड लाइन को टच करते हैं कि नहीं। बिल्कुल वहां पर टच नहीं किया है, और अरावली एरोज उस पोजीशन पे पहुंच गई है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस बचा है, और इस हाफ में 1 मिनट का खेल बचा है। नवीन, Ankle hold was so strong there, Navneet, and apart from Kapil Gurjar, everybody, as I was saying, Lokesh Gosalia, Mahendra Chaudhary, everybody has worked really nicely and in coordination with everybody, and especially going Gurjar. So the defense is fine, and it's just the captain that has to just tighten his shoelaces and say, okay, let the others do the job. And of course, he plays for the Jaipur Police. He'll be having loads and loads of experience. He'll just want to go and dominate Pratik Daya. In that process, he has been sent out on the bench for at least 3 to 4 times in this match. And a do-or-die raid now for Ram Kuwar. 4 in the mix, and he will be out in the fix. He has to go back. Another combination tackle. जी हाँ, कॉम्बिनेशन जब बनता है और खिलाड़ी जब मिल करके शिकार करते हैं तो वो देखने लायक दृश्य होता है। आप चाहते हैं कि टीम में यूनिटी बनी रहे, और देखिए इसी तरीके से यहाँ पर काजीरंगा 22, अरावली एरोज 20 पॉइंट। क्या जबरदस्त खेल हुआ है। एक समय पिछड़ रही थी अरावली एरोज, लेकिन वो इस गेम में वापस आई है, और ये खेल के साथ उनकी मानसिकता, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी को दिखाता है। This all happened because of the all-out, isn't it? When the Aravalli Arrows inflicted the all-out on Kaziranga Rhinos, and that's where the Aravalli Arrows could make a comeback. And Kapil Gurjar, when he won the toss, he wouldn't have thought that he will be taken out by Pratik Daya 4 times today in the first half. And that was all because of his error than Pratik Daya's brilliance. See that, once again. That was the only time that he was successful, and after that, he's all been targeted by Pratik Daya. So only 1 tackle point, but the Raiders have done well for the Aravalli Arrows, especially Ram Kuwar and of course Manu there in the mix for Kaziranga Rhinos. Both sides, the Raiders have got no issues. Pratik Daya is amongst the points. Gangaram has done really well, but defense of Aravalli Arrows finally striking with Mahendra Chaudhary along the number. बिल्कुल बेहद खूबसूरती से आपने इस हाफ को समराइज किया, और देखना है कि जो लूजिंग स्ट्रीक पर, जो हार के रास्ते पर चल पड़े हैं काजीरंगा राइनोज, क्या वो अगले हाफ में उस पैटर्न को बदल पाते हैं, और निश्चित रूप से उस पैटर्न को बदलना चाहेंगे। If they have to change the pattern, they will have to fight it hard, because Aravalli Arrows are looking in good shape, and they are not going to let go of this 2 points to come back and fight them in the second half. It's just a slender lead of 2 points. We just slip into a short little break now, and as we just compare the tackle points with the race, it's and nice to see Aravalli Arrows have got more tackle points than the Kaziranga Rhinos. So that is why I'm saying the defense of Aravalli Arrows is looking in good shape. So with all these challenges, if Kaziranga Rhinos can win this match, that will be really nice, but Aravalli Arrows will not let that happen very easily. Another 20 minutes of game coming up in just a while. Welcome back everybody on Fan Code. The Joe's Just Fine Junoon of Yuva Kabaddi series is getting really hotter and hotter as Kaziranga Rhinos are still searching for that first win in the booster round.
and Aravalli Arrows are not letting them go very easily. Once again, the travel across the length and breadth of the court by Gangaram. Look at that. Oh, marvelous jump, and he's got 2 points. The speedness and the swiftness of which this raider is raiding, and even though he's not a tall raider, the jump and then escape, turning towards the midline, utilizing the lobby and going through, and Hitesh once again from the right corner could not do anything, and they are missing their regular right corner big time is Kaziranga Rhinos, and the start of the second half has not been very good for them as Sagar Ramesh stands there and watches and goes back, and now the scores are revealed here, Navneet. जी हाँ, और काजीरंगा राइनोज अक्सर अपने गेम में रेडिंग के लिए जानी जाती है, खासकर प्रतीक दाहिया के लिए, और जब डिफेंस में देखा जाए तो हरदीप उनके साथ है, और हरदीप के नहीं रहने से, उनके अच्छे परफॉर्मेंस के नहीं होने से वहां पर देखिए किस तरीके से बहुत ही पुअर डिफेंस हो गया है, और एक साथ सभी का शिकार कर लिया। जी हाँ, लगातार पॉइंट्स ले रही है। Yeah, when your corners are not on, then it's a very big difficulty, and that is the difficulty that Kaziranga Rhinos will have to deal now as Sagar Ramesh is a lone man standing. The all-out, the second one, staring at Kaziranga Rhinos' face, under 10 seconds, and he goes and surrenders himself in the left flank, and Lokesh Gosalia says, okay, thank you so much Sagar Ramesh, we'll let you take the bonus, but a second all-out inflicted on Kaziranga Rhinos, and Aravalli Arrows are running away with this lead. And also we have a very special guest in the house where he is coming to look at a lot of talented players from Yuva Kabaddi series, and we do have Mr. Sundaram. He is from Tamil Nadu, and he also is the assistant coach of the Pirates, who's been doing really well. There he is. He's been happy watching all these proceedings. So for the Patna franchisee, he is coming and watching the proceedings. So I would, Navneet, with your permission, would like to just welcome him in Tamil. If you permit me, can I do that? Oh, of course, you can do that in Tamil और भारत के किसी भी भाषा में आप कर सकते हैं। लेकिन भारत के किस डिफेंडर के पास इस बड़े राइनो को रोकने का क्षमता है, बताइए। ये देखिए, what a jump was done on the chain, and he does not get Lokesh Gosalia somewhere. The right flank came in very close towards him, and the jump in the meantime put across, and Pratik Dahiya would have definitely impressed Mr. Sundaram, who's here and sitting in the guest with us today here at Sanskar School, Jaipur. He's the assistant coach of the Patna franchisee, and once again Kaziranga Rhinos get a tackle point as well. So, yeah, Sundaram, வணக்கம். இங்க வந்து நீங்க இந்த ஜெய்ப்பூர்ல சன்ஸ்கார் ஸ்கூல் ஜெய்ப்பூரோட இந்த ஒரு கபடி மேட்ல நீங்க இங்க வந்திருக்கிறது நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. உங்களுடைய இந்த பார்வை எல்லாம் இந்த யுவா கபடி சீரீஸ்ல விளையாடக்கூடிய எல்லா விளையாட்டு வீரர்கள், இள விளையாட்டு வீரர்களை வந்து ரொம்ப நல்லா ஊக்குவிக்கும். வாங்க, யாராவது நல்ல திறமையான ஆள் இருந்தா உங்களுக்கு அவங்க கிட்ட திறமையும் இருக்கு, அப்புறம் விளையாடுறதுக்கான சக்தியும் இருக்கு கை கால்கள்ல அப்படின்னு தோணுனா தயவு செஞ்சு நம்மளுடைய பசங்களை வந்து எடுத்துட்டு போங்க, உங்களுடைய பட்னா பிரான்ச்சைசில விளையாட வைங்க. ஆல் ஹாப்பி ஃபேஸ் ஆன் மிஸ்டர் சுந்தரம். I don't know if you can guess what I just said, Navneet. Oh, of course, आपके जो भाव हैं वो मैं भाव समझ सकता हूँ, बिल्कुल शब्दों का ज्ञान तो मुझे नहीं है, पर कभी जिस तरीके से आप जब बोल रहे हैं, स्माइल करके बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका शानदार स्वागत आप कर रहे थे. और yeah, and I was also telling him to Kapil Gurjar can't go back, come on. He could have just gone in with another touch point from somewhere. Now with the super tackle situation, he'll have to do something. Two proper defenders, Kapil Gurjar and Lokesh Gosalia, and Pratik Dahiya will just kick away Lokesh Gosalia as if there is something stuck on his shoes, and he goes back. It does not even give any respect for the defender when he does that. And what was Kapil Gurjar trying to do and not going in for the block? But yeah, it was not a strong tackle also from Lokesh Gosalia. And I was also trying to tell him that if you really feel that the lad has a lot of potential and talent, and if you feel that his hands and legs are very strong,
and take him away to your Patna franchise is what I was feeling. And Kapil Gurjar somewhere goes in and takes the bonus. That is nice to see. But second all out inflicted on the Aravalli Arrows. So two teams now clashing head to head, and two teams inflicting all out on each other twice. जी हाँ, और 2 बार, और फिलहाल तो पिछले 5 मिनट में हम 2 बार ऑल आउट देख चुके हैं और लगातार रेडिंग पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। डिफेंस कमजोर हो रहा है दोनों टीमों का, और काजीरंगा राइनोस जो पिछड़ गई थी और लगातार वो फिर से 10 पॉइंट ले आई है। और नोटिस करिएगा 10 पॉइंट, और अरावली एरोज 20 पे थी, यानी 8 पॉइंट, यानी 5 मिनट के खेल में 18 पॉइंट। मतलब मैं क्या देख रहा हूं। आनंद कुमार जी मान गए the Super 30, if you remember the character of Hrithik Roshan, you remind me of that whenever you give me such calculations. मुझे नहीं पता कि मैं आपके शब्दों को कैसे लूं, और यहाँ पर फिर से पकड़ लिया गया है नवीन। Mahendra Chaudhary, he is being so lethal, but the initiation happened from Lokesh Gosulia, and the support came in from Mahendra Chaudhary. So it is like that Jai Viru combination of Lokesh Gosulia and Mahendra Chaudhary here. If one goes in and the other comes out, and if you feel Jai Viru is too old an example, I will also say Vikram Bala example. Okay, Vikram Bala of Aravalli Arrows is Lokesh Gosulia and Mahendra Chaudhary. And Gangaram once again goes in and with a very swift toe touch gets Manu out from the equation and comes in. And when I was talking in Tamil also, Navneet, there is one hidden agenda for me also, where I'm just indicating all to the think tank of Yuva Kabaddi series that we'll have to start regional commentary very soon. Of course, yes, we do have Hindi as that regional language across India, but we do also need a few more languages, isn't it? एब्सोल्युटली, जो इस देश में विविधता है, और अगर हम जो भी लोकल पीपल है और उन्हें अपनी भाषा में कमेंट्री सुनने का तो आनंद आता ही है। अपनी भाषा तो हमेशा अपनी भाषा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब आप अपनी भाषा में कुछ आनंद ले पाते हैं, और वो जो फीलिंग होती है, जो इमोशंस होते हैं, और जब वो प्यार आता है, जब गुस्सा आता है, हर चीज, हर इमोशंस अपने भाषा में ही आता है। very much. ஸோ கடவுள் அருளால் மக்களோட ஆதரவுனால எங்கேயாவது வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி அடுத்த சீரீஸில் தமிழ் காமெண்ட்ரி பண்ணுறதுக்காக, கன்னட காமெண்ட்ரி பண்ணுறதுக்காக, தெலுங்கு காமெண்ட்ரி பண்ணுறதுக்காக ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ what I'm trying to say is, with God's willing and with support of all the people watching live on Fan Code, going forward, Kabaddi series will also be looking at that regional commentary coming in. But the ankle hold does not come in the way it was wanted for, and Lokesh Gosulia wanted some help. He could have got help. The ankle hold was strong and Pratik Jaya was struggling. Kapil Gurjar could have come in, and that is the look that Lokesh Gosulia gives his captain. Now, I will really say the support could have gone. There was some points and there was some time for the support to put away Pratik Jaya off the match. देखिए, इस मैच में 34 और 30 काजीरंगा राइनोस अपने लीड को बनाए हुए है। 12 मिनट का खेल शेष है, और हमारे स्क्रीन पर बेहद शानदार खिलाड़ी प्रतीक दाहिया, और देखिए इनकी चाल बदल गई है। इनकी चाल में वापस से वो कॉन्फिडेंस आ गई है, और वो धीरे धीरे अपना वक्त ले रहे हैं। अब देखिए फुटवर्क भी तेज हो रहा है, और शुरू में वो कुछ देर वक्त लेते हैं। अब देखिए आखिरी 10 सेकंड यहाँ पर है, और एम्प्टी रेट के साथ चले गए हैं। See, he is not very hungry for points in this match. He is playing it very cool and calm, and it is a do or die raid now for Gangaram, where he should get a point. Toe touch, goes in swiftly, does not get it, and then he even goes back and tries it against the right corner. It is so much so for Hitesh. He had a lot of time in the world. He's definitely gotten 2 points, and it is Hitesh and left cover Rohit Kumar who has to go out on the bench. Oh, he's got so much time there, Navneet. If it was the regular defender, it would have been certain on Gangaram a long ago.
Hitesh had so much time. He did not go in for the tackle at all. जी हाँ, इसीलिए स्पेशलिस्ट का जो काम होता है वो तो स्पेशलिस्ट का काम होता है। और देखिए जिराफ की तरह किक मार रहे हैं लंबे टांगों से, दुलत्ती वहां पर मारी थी और यहां पर शेर की दहाड़ भी लगाई उन्होंने, जंप मारा और क्या वहां पे मिडलाइन को टच किया है नवीन। Oh my God! Let me count on this. It was 4 attempts. It was 4 attempts to cross the midline. Jump, then goes to the lobby. That's attempt number 2. Attempt number 3 on the leg. Then once again. My God! It was 4 attempts to cross the midline, and Karthik Daya really wants this win. I understand how much of an importance this is, but somewhere it is not even nice to see that Chetan Kumar, who was substituted in as a big defender, got a little cut on the right side of the ear, or the the place where the eyebrow and the ears are in between. So there is some cut, but we have our physio partners, UEM, University of Engineering and Management, to look after him. And also, I should be mentioning this about Dr. Abhishek Gupta, who is the best man when it comes to joint replacement and sports injuries. He's a big surgeon in association with Metromax Hospital, our hospital partners. But that raid is the raid of the match. Even though it was an unsuccessful raid, it was a marvelous tackle. But for me, it really summarized what Josh, Jazba and Junoon means. The series' raid showed that 4 attempts to go towards the midline, and once again an easy point for Manu. बिल्कुल, और वो जो स्ट्रगल होता है, वो जो जद्दोजहद होती है, वो जो मिड लाइन को टच करने की कोशिश होती है, और जब वो जद्दोजहद होती है तो देखने का आनंद ही कुछ और होता है। और वहां पर प्रतीक दाहिया, जी हाँ, और प्रतीक जद्दोजहद यानी कि जब आप कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं और आप मतलब कि कभी गिव अप नहीं करते हैं, तो वो शब्द आता है वहां से। In which portion of or which part of the country this lines are used more? Because I'm listening this for the first time. अब ये तो मैं मतलब इस बात पे मैं ज्यादा नहीं बता सकता आपको। जद्दोजहद अक्सर हम अपने आम भाषा में बोलते हैं, और ये लाइफ में जैसे स्ट्रगल होती है ना, जब आप पूरे दिन अपने जो यहाँ के भारत के सभी लोग हैं वो अपने जीने में जद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश खास बनाता है हमारे जीवन को, क्योंकि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी का मजा नहीं है। Your breathing itself has no value if you do not try. Absolutely, very well said. But Aravalli Arrows are trying very hard to come back into this match. Just a slender lead once again for Kaziranga Rhinos, and it's a do-or-die raid now for Ram Kuwar. He's done it before, but against 5, he will have to put everything that he's got in the tank. And nice to see Hitesh retrieving back in time and not getting succumbed with that very quick running hand touch. He goes into the left corner. Hitesh has to go in and block. He's got a lot of time. Can he do that? Yes, he does with the ankle hold. Oh, finally, Mohit Narwal getting that ankle hold, and then Hitesh going in for the support after the ankle hold. I would have really wanted Hitesh to just at least go in and have a scare on the radar, but then all ends well, no problem. जी हाँ, वहाँ पे एंकल होल्ड किया, वो तो शानदार था ही, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो मजा आया देख करके, यहाँ पर पकड़े गए हैं राइनो, यहाँ पर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं जो पॉइंट बता रहा था, पिछले रेड में जब वो डिफेंस कर रहे थे, उनके एंकल होल्ड को पकड़ा गया था, वो एकदम अंदर तक इनवाइट कर रहे थे, और अक्सर हम बात करते हैं कि एडवांस टैकल नहीं करना चाहिए, उनको पूरा भीतर तक बुलाया, अपने घर में बुलाया, और घर में बुला करके जो पकड़ा उसने, मजा आ गया खेल देख करके। Yeah, that is what is more required. Oh, careful. I should really be telling these young lads to hold on to their horses when they are playing on the mat. It is not easy. You have to have a lot of practice and fitness, and I'm really happy that Gangaram just slid away safely towards the lobby.
It's fine that he's out, but I'm happy that he's not injured himself, because this match can be very, very tricky if you're not fit enough and having that proper practice. But Kartik Daya has got 16 great points tonight, and he's got his Super 10, and his 202 is being added, another 16 onto it, that makes 218. So somewhere in the hunt. But Gangaram also has got a Super 10 for himself. Ram Kuwar comes up with a 7 great point, and I'm happy to see Lokesh Gosalia has a high 5 for himself, and Mahendra Chaudhary is just 1 point away with a high 5 which is there around the corner. But it is now, can you even expect the way he just makes his way through in the week of the time when the defense was coming so close towards him? He found a gap that was as big as you can drive through a truck in between that gap. बिल्कुल, और जो फोर्स है प्रतीक दाहिया का वो निश्चित रूप से ट्रक वाला फोर्स है, वो धक्के दे करके दूसरों को निकल जाते हैं। पर यहाँ पर जैसे बाइक निकलता है छका करके वैसे निकला, और यहाँ पर देखिए क्या खेल देखने को मिल रहा है। Finally, Govind Gurjar. How many? 1, 2, 3, and there you go, 4. No. Right, let us fall on him as a sack of rice bags. That's what happened. He was unstoppable. That was nice to see. But now it's all action now in the Aravalli Arrows then, as it's a super tackle, and Pratik Daya is moving on the length and breadth of the court and trying to make sure he gets the point from somewhere. Kapil Gurjar! No! That is not how you dash the biggest rhino. The rhino is very, very mighty and powerful. You should have gone in freely and with a lot of force, and the rhino dashes the defender and goes across towards the midline. What skills, man, what skills. बिल्कुल, वहां पे प्रतीक क्या करते हैं, वहां पे ब्लफ देते हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो किक मारेंगे, पर वो आधे ही किक मारे और फिर जाके जहां से धक्का आया उस धक्के को भी उन्होंने धक्का दिया और मिड लाइन को क्रॉस कर गए। And it's Vishnu Sahu. Could have done it. As Pratik Daya was charging towards the midline, he just held there for a while. He could have done it, but super tackle. Will it happen? Vishnu Sahu goes in for a double thigh hold, and Pratik Daya jumps over him. Vishnu Sahu also not a tall player. He's basically, he's got an all out. Right, I was just thinking it's 1 point. Lokesh Gosalia also goes in that meantime. I think the kick somewhere got Lokesh Gosalia in the jump there. And now it's a big lead for Kaziranga Rhinos, Navneet. It's a very big lead. बिल्कुल, 15 मिनट के खेल में 22 पॉइंट लाए हैं काजीरंगा, जो कि 22-20 की गेम चल रही थी। तो देखिए यहाँ पर और 22 से 44 पर पहुंच गए काजीरंगा राइनोस। 5 मिनट का खेल बचा है, वहीं पर एक बड़ी लीड बना ली है, 10 पॉइंट की लीड, लेकिन 5 मिनट में ये कवर भी हो सकती है। और देखना है कि अरावली एरोस की जो तरकश है, यहाँ पर देखिए इमेजेस में भी वो जो उनकी लोगो है वहां पर उनकी तरकश में तीर नजर आ रही है मुझे। तो सही में कितनी तरकश में वो तीर है, वो तीर कितनी धार है, और क्या उसमें इतनी धार बची है कि वो राइनोस को घायल करके यहां से अपने पक्ष में वो मैच कर पाए। देखिए 25 सेकंड का खेल, और गंगा राम, और जैसे गंगा की प्रवाह होती है, गंगा रिवर जैसे चलता है एकदम बिना रुकावट के, उसी तरीके से गंगा राम साहब कमाल का फ्लो है उनका। And in that flow, he's also got a bonus point for himself. And it's down to now 9 point lead. He will push away Kapil Gurjar, but the support came in nicely. The way he pushes the defender, and Kapil Gurjar is not a slim man, mind you. He's a strong lad, and look at that. And just with the left hand. It's not even the right hand. मतलब क्या बोलते हैं उसको, दाएं हाथ का खेल कि बाएं हाथ का खेल? मतलब कि रॉन्ग हैंड का खेल। अब उनका कौन सा हाथ स्ट्रांग है ये तो मैं नहीं जानता नवीन साहब। Very true. But single-handedly. Let us put it this way. And a double thigh hold, and Gangaram has to go back in the wake of bringing up big points. Kartik Hooda
now gets the point, and Hitesh has been substituted. That's nice to see. And coming in from that in position is Pratik Hooda. This time getting that double ankle hold, and Gangaram, who was very, very instrumental in getting those raid points, has to go back on the bench. Thankfully, it's not. Even though it is not Pratik Daya, Kaziranga Rhinos get a point, and Govind Gujjar once again very, very weak on the defense and the dash. See, sometimes what happens, I'm very not sure when these defenders, especially from the covers or even corners, they go in for the dash and somewhere they want to block the raider. Why do you have to do that? And that's why I always say, आधी चम्मच defense or एक चौथाई चम्मच push. And that is what happens when the defense is going in for the unsuccessful tackle. जी हाँ, और आप जो बात कर रहे हैं नवीन, हमें एक बात ये भी याद रखनी पड़ेगी कि ये जितने खिलाड़ी है युवा है और जीवन में वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कबड्डी खेल आनंद ले रहे हैं, और अक्सर ऐसी छोटी छोटी गलतियां होंगी, और इन छोटी गलतियों से ये जो युवा कबड्डी अवसर दे रहा है आपको गलतियां करने की, और गलतियां जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यही खिलाड़ी जो आज गलती कर रहे हैं वो कल देश का नाम रोशन करेंगे, और वो याद करेंगे कि युवा कबड्डी ने उन्हें ऐसा अवसर दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, और वो शुक्रिया करेंगे फैन कोड का भी कि वो फैन कोड हमें ये गेम देखने का आनंद दे रही है और रिकॉग्निशन दे रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है। और मैं यहाँ से आपको बोलने के लिए कहूंगा कि आपका इस बारे में क्या सोच है। Very true. You sweetly said that. You sweetly said that. But let me tell you also here, Navneet, see what's happening is we are in a very, very competitive world, and there is very less opportunities. And it is going to be what, 70th match, 7-0, or rather 69th match of Yuva Kabaddi series today. This match is 69th, and 69 matches I have seen when the successful tackle happens from the dash. It is full-on dash. It is a full-on dash. No half measures, no mixtures of recipes, and it is a full-on dash, and that's successful. When a defender has doubt and then mixes up with 50% of dash and 25% of push and another 20% of block, only then the issue occurs. And that is what I was just trying to say. Yeah, agreed with you where the Yuva Kabaddi series has given a very, very good platform for these youngsters to learn a lot. And then it's a do-or-die race now. And this is going to be interesting for Manu. And look at that for Lokesh Gosalia. This is what you have to do. Go in strong and just go out all-hearted. Do not have double-minded tackle attempts is what I'm just trying to say, and that's what Lokesh Gosalia showed us now. Full-on blow. Do-or-die raid now once again. All yours, Navneet. Back hold. Full-on back hold this time. बिल्कुल वहां पर गंगाराम को पकड़ लिया गया है। लेकिन मैं पिछले रेड पर ध्यान ले जाना चाहूंगा। जब सेकंड इतना कम बचा है तो काजीरंगा राइनोस को वहां पर वक्त गुजारना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर प्रतीक दाहिया कर रहे हैं। और ये मैं देख करके बहुत खुश हूँ। वो अपने टीम को जिताना चाहते हैं, वो शानदार रेडर है, वो चाहेंगे तो पॉइंट्स भी ला सकते हैं, पर यहाँ पर पॉइंट्स से ज्यादा महत्वपूर्ण करेंसी यहाँ पर वो सेकंड्स है, और वो किल कर रहे हैं समय को। Definitely. If points are dollars, time was pounds. Yeah, very nicely put across. But now, what I should really be focusing on, or rather taking everybody's focus, is Aravalli Arrows to get 1 point from this match. It's very important. It is 9 points now. Somewhere they'll have to make sure they get 2 points still, and they will still be getting that 1 point if they get it on 7 or under 7. Pratik Daya will not allow that to happen. 48, and I should say, it's not 9, it's 11 points, isn't it? Yeah, 11-point lead, and I guess it's tough for Aravalli Arrows to even get a single point out of this. Yeah, it's all curtains for Aravalli Arrows, और देखना है कि एक रेड का अवसर तो निश्चित रूप से Aravalli Arrows को मिलेगा। Yeah. Oh, Vishnu Sahu goes in, and come on, think about that 1 point, Vishnu Sahu. Nobody thinks about that. It is so important. And Kaziranga Rhinos for the last
last ever, or rather I should be saying finally, a big team registering a big win here in the booster round. It was due for so many matches. It was due for 5 matches and it came on in this match. 48 for the Kaziranga Rhinos, and I am mighty happy. I am mighty relieved more than the coach, because such a strong team like Kaziranga Rhinos cannot be losing it so consecutively, and that was so very detrimental for Yuva Kabaddi series as well. But now I'm really happy where they are striking back, and I'm sure that this win will make sure they come back into that double round robin round that is going to start in just a couple of days. That's very important, and I really want to see Patik Jaya and the entire team of Kaziranga Rhinos in the challenger round. But Aravalli Arrows played well, but they were outsmarted by this biggest rhino, and I should be saying Sagar Ramesh and Manu also helped Patik Jaya very nicely. And in the second half, when the third all-out, I guess, was inflicted on Aravalli Arrows, they could not make a comeback from there. बिल्कुल, और इस जीत से मुझे लग रहा है कि 7वें पोजीशन पे आ जाएंगी काजीरंगा राइनोस, क्योंकि जो पॉइंट का डिफरेंस है, और यहाँ पर वो 6 पॉइंट भी लेकर के आई है काजीरंगा राइनोस, तो उनके पास 7 पॉइंट हो गए हैं, और मराठा मार्वल्स अब आखिरी पायदान पर है, तो एक जीत उन्हें एक पायदान ऊपर लेकर के गया है। और कमाल की बात है कि वो पांचाला प्राइड से बस 1 पॉइंट से वो कम रहेंगे, तो पांचाला प्राइड के पास है 8, काजीरंगा राइनोस के पास है 7 और मराठा मार्वल्स के पास है 6। तो नीचे के लिए भी एक जद्दोजहद चल रही है, वो आखिरी 6ठी स्पॉट किसकी होगी ये देखना बेहद रोमांचक होगा। और देखिए यहाँ पर हमारे सामने है स्कोर लाइन 48 और 37, यानी कि 11 पॉइंट की डिफरेंस जिसकी बात आप कर रहे थे, और वहां पर रेड पॉइंट्स में 9 पॉइंट्स की लीड है। तो ये निश्चित रूप से प्रतीक दाई है जो कि इस मैच में 20 रेड पॉइंट लाए हैं, वहीं अरावलीज की पूरी टीम मिलकर के 20 रेड पॉइंट्स लाई है। सो दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज। टैकल पॉइंट में कहीं डिफरेंस नहीं है, 13 और 12, यानी कि खुश होना होगा काजीरंगा राइनोस को भी, क्योंकि वो टैकल में लगातार पॉइंट्स नहीं ला रही थी, यहां पर वो टैकल में पॉइंट्स ला रही है। 6 ऑल आउट के पॉइंट मिले हैं, यानी कि 3 बार वो ऑल आउट किए, और एक्स्ट्रा में भी 1 पॉइंट का आनंद वो लिए हैं। So that is 222 for Pratik Jaya. 202 before this match, 28 points, and it's 222 for him. And Kaziranga Rhinos put up that first ever point here in the booster round, and they jump up on the Maratha Marvels, because in the last match of the on the 6 PM match that we had, Maratha Marvels lost it on a very, very big margin to Taroba Tigers, and that is what has helped Kaziranga Rhinos go up on that 6th place. And watch out, Panchala Pride, the Rhinos are right behind you, and that is day 6 for us as Kaziranga Rhinos wrap up this day with 11-point victory, first ever victory for them in the booster round, and it was so important for such a big team to fire, and they have started to fire. Better late than never, they really have started to fire. So it was a marvelous Monday today, and it went on really nicely with all these 4 matches. But tomorrow on Tuesday it's day 7 in the booster round, and that is also going to be lined up with 4 fantastic matches in front of us. And first up, it's definitely going to be at 10 AM. It is the Periyar Panthers versus the Taroba Tigers, and at 12 noon it's going to be Kaziranga Rhinos once again taking upon the Panchala Pride. Yeah, that's what I said. Watch out, Panchala Pride. Kaziranga Rhinos are right behind you. And then the Murthal Magnets versus the Maratha Marvels. And at 8 PM we will have the Humpy Heroes versus the Aravalli Arrows. So that's it for today here on day 6 from Sanskar School, Jaipur. I was Navin Chaudhary with you along day today, and then alongside with me was Navneet. Thank you so much everybody for watching this live coverage on Fancode. थैंक यू नवीन, थैंक यू सभी दर्शकों का।